ओके स्टूडेंट वेलकम। तो सबसे पहली कंसेप्ट हम करेंगे विजुअल एंगल की। विजुअल एंगल, it is the angle subtended by the object at the eye. At the eye. If visual angle is small, then we are not able to see the objects clearly. Suppose करिए ये एक ऑब्जेक्ट है and here is your eye. Theta is called visual angle. So tan theta is given by size of object upon d. So tan theta can be written as OD. For theta to be large, O should be large, size of object should be large, and D should be small. Where O is the size of object. This is not 0, this is the size of object. This is the size of object. So note it down. If the angle subtended at the eye is small, then we are not able to see the objects clearly. तो लेंस की एप्लीकेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बाद अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब लेंस के पार्ट है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस. So note it down. तो अपनी स्लाइड में आगे आते हैं और इसको आप समझिए बात को.
the function of an optical instrument to form a large image of object nearer to the eye, nearer to the eye. So optical instrument increases visual angle. Magnification of an optical instrument is the ratio of angles. अब अगले कंसेप्ट हम पढ़ेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision. It is denoted by capital D. पहला point. It is the minimum distance up to which objects can be seen through the eye. Clearly. Second point, D is equal to 25 centimeter. D equal to 25 centimeter. अब हम सबसे पहला ये लेंस की एप्लीकेशन है
तो उसी को हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इंपॉर्टेंट है, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं आपके कोर्स में। अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। called objective lens तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसका जो अपर्चर होता है, जो पहला लेंस होता है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो पहला लेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसका अपर्चर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। उसका अपर्चर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो पहला लेंस कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो दूसरा लेंस कहलाएगा, उसे हम जो आंख के पास रहता है, नियरर टू द आई, दैट इज कॉल्ड आई पीस लेंस। Like that you can understand. This is the first, known as O, and this is the second, known as E. Both the lens, O stands for objective lens, E stands for eyepiece lens. तो ये दो लेंसों से मिलकर बनता है। This is the first point. Second point, diameter of aperture of objective lens is large. To form the bright image. To form the bright image. हाँ, आईपीस लेंस से हम देखते हैं। दूरबीन देखी होगी ना आपने, जो आंख के पास लेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आईपीस लेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड आईपीस लेंस। तो अब इसका अपर्चर लार्ज होता है। लेट मी टेल यू, जो लेंस होते हैं, ये आपको दिख रहा है एक लेंस, ये एक्चुअली क्या होता है? सर्कुलर होते हैं। फिर लेंस की क्या करते हैं हम? कटिंग करके चश्मे में, स्पेक्स में लगाते हैं। तो लेंस क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। आपने अपने बायनोकुलर में भी देखा होगा, लेंस क्या होता है? सर्कुलर होता है। इसलिए हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर। अपर्चर का मतलब है लेंस का वो सर्कुलर पोर्शन, लेंस का वो सर्कुलर पोर्शन जिससे लाइट एंटर करती है। तो डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज। बहुत बार पूछा गया, टू फॉर्म अ ब्राइट इमेज। टू फॉर्म अ ब्राइट इमेज इसलिए रखते हैं। एंड सेकंड, फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर। फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, रिजॉल्विंग पावर आगे चलकर। This question is asked in several times in the examination. बहुत बार पूछा जाता है और बहुत important है। Here is your eye. You are absolutely right. Somewhere here. So the lens which is nearer to the eye is called eyepiece lens. And the lens which is farther from the eye is called objective lens. तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, focal length of
objective lens is large, whereas focal length of EP, that is eyepiece lens, is small. For large magnifying power. आगे चल के आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे FO is greater than FE. अब जैसे आपको सपोज if we are given 4 lenses of focal length 120 centimeter, 100 centimeter, 5 centimeter, and 2 centimeter. Which two lenses? Question है आपके एग्जामिनेशन का. Which two lenses should be used? Which two lenses should be used for astronomical telescope. अब ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो आंसर है हमारा FO should be 120 centimeter and FE should be 2 centimeter. और हमेशा याद रखिए FO minus FE should be large. And the reason for all these is very simple reason for having the large magnifying power. So note it down. सिलेक्शन ऑफ लेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, कि कौन सा लेंस आप ऑब्जेक्टिव के लिए लेंगे जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो, और कौन सा लेंस आप आईपीस लेंस के लिए लेंगे और जिसको फोकल लेंथ सबसे कम। और ऐसे करने से हमें क्या फायदा होता है, वी लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, ये ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, definition of magnifying power. Of
astronomical telescope and is beta upon alpha. Angle subtended by the object at the eye. और बीटा को लिखिए आप एंगल सबटेंडेड by the final image at the eye. अब ये डेरिवेशन, ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं. In next slide we are going to derive it. So note it down. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को. लेंस की एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so I'm moving to the next slide. ये देखिए, this is the diagram for astronomical telescope. तो हेडिंग डाल दीजिए रे डायग्राम. पूछा जाता है. अब देखिए, astronomical telescope is used for the objects which are situated at infinity. पहली चीज पहले समझ लीजिए. Light rays are coming from infinity. When light ray comes from infinity, they are considered parallel to each other. You can see that light rays, this is objective lens, and this is, let me tell you, eyepiece lens. ऐसे बनाएंगे. The light rays are coming from infinity. So when light ray comes from infinity, they are considered parallel. They are considered parallel. So objective lens here, listen, इस बात को अच्छे से समझिए. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कितने कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं. तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की थ्योरी यहाँ अप्लाई होती है. तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या होती है? फर्स्ट इमेज वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन. फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो भी इमेज फॉर्म होता है वो सेकंड रिफ्रैक्शन के ऑब्जेक्ट का वर्क करता है. तो पहली इमेज यहाँ कौन सा लेंस बनाता है? देखिए डायग्राम में, ऑब्जेक्टिव लेंस. क्योंकि लाइट रेज इंफिनिटी पे आ रही हैं, पैरेलल हैं, ये आपकी पहली इमेज हो गई. दिस इज A dash, B dash is your first image. So first image will be formed at the focus of objective lens. Why? एक कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे इमेज कब बनाता है? एक कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे इमेज कब बनाता है? जब लाइट रेज आर पैरेलल. पहली इमेज बन गई A dash, B dash. और दूसरी चीज यहाँ पे इस डायग्राम में मैं थोड़ा आपको और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कुछ एक चीजें. देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो FE डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, it should not be FE. What it should be equal to?
UE. What is UE? Object distance for eyepiece lens. आप डायग्राम बनाइए और मेरे को बताइए। A dash B dash is the first image. मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। First image formed at the focus of objective lens. First image A dash B dash work as an object for EP eyepiece lens. EP lens forms the image A double dash B double dash of the object A dash B dash A dash B dash. अब एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि फर्स्ट इमेज कैसी है, तो आप बताएंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज का जो नेचर है रियल है। फर्स्ट इमेज इज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पूछा जाता है फाइनल इमेज के बारे में। फाइनल इमेज इज वर्चुअल। फाइनल इमेज इज वर्चुअल। आप इसको देखिए, ये वर्चुअल है। आप डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? शुड आई ड्रॉ फॉर यू प्लीज? आप मुझे बताओ। आप लिख लीजिए फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो फिर मैं अगले पेज पे, अच्छा आप ड्रॉ कर सकते हो? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा डायग्राम बनाने की। ओके, आई विल टेल यू द ट्रिक। आप आराम से कराइए, टेक योर टाइम। और एक मिनट में आपको एक ट्रिक बता ही देता हूँ, रुक जाओ आप। मैं वापस आऊंगा स्लाइड पे। अब देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या करिए, आप एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लीजिए, ठीक है। और ये हमारा, मेरे को बनाते हुए देखिए, जस्ट सी मी, लुक एट, दिस इज ऑब्जेक्टिव। अब लाइट रेस पैरेलल है, ये यहाँ कहीं फोकस पे हम इन्हें मिला देंगे। जो लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो मुड़ती नहीं है। ये बन गई पहली इमेज। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट। तो ये आपको बनानी है फर्स्ट इमेज। थोड़ा लाइन अच्छे से ड्रॉ करिएगा और यू कैन यूज द, ये आपकी फर्स्ट इमेज बन गई। ऐसे आपने फर्स्ट इमेज बनानी है। ए डैश
बी डैश। पहले आप सीख लीजिए। सॉरी, लगता है इंक चला गया, कोई बात नहीं, वी विल ड्रॉ इट अगेन। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। पेंसिल यूज करिए, स्केल यूज करिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ये हम पहली इमेज बनाते हैं, एक लाइट रे। सबसे पहले आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दीजिए, ऐसे पहले इमेज बना दीजिए, ठीक है। अब इस लाइट रे के पैरेलल दूसरी लाइट रे लिखिए, लीजिए। अब इसको बेंड करना है, तो बेंड करके ये ए डैश से मिलाना है। वी हैव टू जॉइन विद ए डैश। तो ये आपकी फर्स्ट इमेज बन गई। और फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप सेकंड लेंस ड्रॉ करिए। हमेशा याद रखिए सेकंड लेंस, ये हो गया सेकंड लेंस। प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। अब आप फाइनल इमेज बना दीजिए इधर कहीं। ये देखिए फाइनल इमेज हमने पहले से ही बना दी, ए डबल डैश एंड यू कैन कॉल इट बी डबल डैश। अब क्या करना है, ये देखिए, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे ड्रॉ करी, एक और इसको पीछे ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये लाइट रे आपने पास कर दी। और उसके बाद अब आप डिसाइड करिए कहाँ इमेज बनानी है। यहाँ पे आप इमेज बना दीजिए, कहीं पे भी बना दीजिए, ऐसे सीखो। ये डबल डैश हो गया, ये बी डबल डैश हो गया। इसके बाद क्या करो, ये लाइट रे, अब इसको पीछे की तरफ मिलाना है, पहले मिला दो। और ये ऐसे लाइट रे चली गई और यहाँ आपकी आई हो गई। दिस इज यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस। और फाइनल इमेज आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे बनेगी 25 सेंटीमीटर पे। तो ये हो गया। अब लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। Do you learn on the graph how to draw the image? आपने सीखा? कैसे करूं? Should I repeat? ये ट्रिक होती है इमेज बनाने की। आपको समझ में आया कि कैसे बनाते हैं? अच्छा, अब आप देखिए पीछे वाले डायग्राम पे जाते हैं। ये यहाँ पे भी यही किया। आप ऐसे भी बना सकते हैं और जैसे मैंने ड्रॉ करा है वैसे भी बना सकते हैं। चॉइसेस आर योर्स। Final image is virtual and inverted. Final image is virtual and inverted. You take your own time, no issue. क्योंकि डायग्राम द 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब यहाँ पर आता है तो डायग्राम पे ही 2 to 3 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स डायग्राम पे होते हैं। तो डायग्राम शुड बी वेरी वेरी क्लियर। So draw the diagram and tell me.
and tell me when your diagram is completed. So light rays are coming from infinity, so they are assumed to be parallel. And parallel light rays when passes through, always remember, when parallel light rays passes through a lens, the image is formed at focus. The first image of the distant object. First image of the distant object is A dash B dash. This image will work as an object for eyepiece lens. So eyepiece lens forms the final image A double dash B double dash at a distance D from the eye. D is called the least distance of distinct vision. अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है the final the angle subtended by the final image at the eye, that is beta. This is UE. This is beta. And angle alpha is the angle subtended by the object at the eye. अब देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, ऑब्जेक्ट आई से कितने डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट आई से कितने डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम कि हमारी आंख, अवर आई इज नॉट हियर, इट इज हियर, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, डिस्टेंस बिटवीन ओ लेंस एंड ई लेंस इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन एज्यूम दैट अवर आई इज नॉट हियर, अवर आई इज हियर। तो देखिए आप सोचिए कि आपकी आई अगर ओ पे रखी हो और आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, तो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर कितना एंगल बनाता है, अल्फा। ये इसमें सबसे बड़ी ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। दिस इज अल्फा, देन दिस इज आल्सो अल्फा। वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम मान सकते हैं कि हमारी आंख ई पर ना रखी हो, कि कहां पर रखी हो, ओ पर रखी है, ओ पर रखी है। तो बस इस डायग्राम में आपको अल्फा और बीटा याद रखना है। ओके, बाकी बच्चों ने बना लिया डायग्राम। तो यहाँ तो मार्क्स तो डायग्राम के है ना, इट्स ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, इट्स ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। या तो म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन म्यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 अपॉन r1 माइनस r2, या क्वेश्चन आएगा 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और यू विल गेट इट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन म्यू। और फिर अगला लॉन्ग आंसर यहाँ बनता है, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। दो हमारे इंस्ट्रूमेंट है कोर्स में, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों में से कहीं से भी 5 मार्क्स आ सकता है। तो रे ऑप्टिक्स हैज बीन अलॉटेड 14 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा लेंस के चैप्टर में लॉन्ग आंसर्स बनते हैं, और दूसरा बनता है वो प्रिज्म का डेरिवेशन, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो ये 5 या 6 लॉन्ग आंसर है, इन्हीं में से रिपीट होते हैं, एक तो उनको पूछना ही है। So everybody has drawn the diagram. Okay, so I am moving to the next slide. अब देखिए मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया था, अब डेरिवेशन देखिए, ये जो एंगल है, दिस इज अल्फा, सो दिस इज आल्सो अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज। अब आप देखिए ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में tan अल्फा निकालिए, tan अल्फा निकालिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के, अपॉन प्लस है, दैट इज इक्वेशन 1। फिर आप एक काम करिए, ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश को ध्यान से देखिए, और यहाँ निकालिए tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज बेस, so this length is UE, लेफ्ट साइड पर है इस लेंस के लिए, इसलिए माइनस UE। फिर हम मैग्नीफाइंग पावर, अब हम अगले स्टेप में जाएंगे और मैग्नीफाइंग पावर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और यहीं पे कर सकते हैं। तो लेट्स चेंज द
Magnifying power is beta upon alpha. For small angle m, beta can be written as tan beta, and for small angle alpha can be written as tan alpha. अब बताओ tan बीटा को क्या रखेंगे? सेकंड इक्वेशन को देखो, tan बीटा हो गया हमारा माइनस ए डैश बी डैश अपॉन, look at the second equation. Now we will put the value of tan alpha from first equation, minus a dash b dash अपॉन प्लस एफ ओ। तो ये तो a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर आएगी माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, और ये डिस्टेंस याद रखिए कितना है, d. That is third equation. So please note it down. तो ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब अगर हम मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं तो हमें यूई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Now we'll have to find the value for UE, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर किस पे डिपेंड करती है, यूई पे डिपेंड करती है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू फॉर यूई? अब यूई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आईपीस लेंस करेंगे। वी विल यूज द लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस लेंस। ओके, तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। We are moving to the next slide. When final image is formed at, ऐसा लिखना चाहिए, INCRT से आप रिवाइज करिए, least distance of distinct vision using lens formula for EP means eyepiece lens, 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u। अब वापस पिछली स्लाइड पे जाते हैं। देखिए फॉर्मूला हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, आईपीस लेंस के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस है। इमेज उसके लेफ्ट में बन रही है, कितने डिस्टेंस पर, माइनस वी। ऑब्जेक्ट उसके लेफ्ट में है, माइनस वी। तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यू। अब आपका मैग्नीफाइंग पावर क्या था, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू, और यू की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। सो दिस इज योर डेरिवेशन। Now you can note it down. और इस फॉर्मूले को अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस। अच्छा, यहाँ एक और चीज आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन shows that final images
inverted, nothing else. अब astronomical telescope is used to see heavenly bodies. Remember, with the help of astronomical telescope, what we see Jupiter, Mars, Moon, and these heavenly bodies are spherical in shape. Are you getting? These heavenly bodies are spherical in shape. तो स्फीयर का इमेज उल्टा भी बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है? Does not make any difference. So that is the magnifying power. इसमें अब हम एक चीज और निकालना चाहेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब. ये देखिए, ये कहलाता है एल. एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्यूब. अब अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, तो आप बहुत सिंपल वे में बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ओ लेंस एंड ई लेंस. ओ लेंस और ई लेंस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ ट्यूब कहेंगे. ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया. तो आप देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है. यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब होगी एफओ प्लस यूई. लेंथ ऑफ ट्यूब इज एफओ प्लस यूई. Length of tube will be equal to FO plus UE. Okay, so let's move. अब हम अगली स्लाइड में लेंथ ऑफ ट्यूब पे बात करेंगे. लेंथ ऑफ ट्यूब ब्रैकेट में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन O means objective lens and eyepiece lens. It is FO plus UE. और आप जानते हैं 1/UE क्या था? 1/D plus 1/FE. एक काम करते हैं, we'll take the LCM. So we will write UE equal to DFE upon D plus FE. Now length of tube can be written as FO plus UE. तो यहाँ पे हम UE की वैल्यू पुट कर देंगे DFE upon D plus FE. So all this formula is applicable when final image is formed at least distance of distinct vision from the eye. और मैग्नीफाइंग पावर तो हम निकाल ही चुके हैं, अभी निकाला था -FO into 1/D plus 1/. तो ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होंगे when final image is formed at least distance of distinct vision. तो आप इसको नोट कर लीजिए. So this derivation is very, very important. So let's move to the next slide. When final image is formed at infinity,
It is called normal adjustment. हमेशा याद रखिएगा, normal adjustment. It is also called for relaxed eyes. It is also called normal vision. और क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल विजन बोलते हैं. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, using the lens formula for EP means eyepiece lens. इमेज कहाँ बनी? इंफिनिटी पे. ऑब्जेक्ट कहाँ था? माइनस वी पर. लेंस कॉन्वेक्स था इसलिए प्लस. So it will give us U equal to F. So magnifying power will become minus FO upon UE, that is minus FO upon FE. Magnitude में हम लें तो FO upon FE, and length of tube become FO plus UE. So it will become FO plus FE. तो आप ये याद रखिए. इसको आप नोट कर लीजिए. और फिर नॉर्मल विजन के लिए हम एक डायग्राम पे भी बात करेंगे. तो आपको वो डायग्राम बनाना चाहिए. इसे आपने नोट कर लिया. फाइव मार्क्स. रॉन्ग आंसर. तो अब हम डायग्राम की तरफ जाएंगे. तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए. किसी ने नहीं बनाया लिखा है तो प्लीज लिख लो. Okay, now we need to draw one diagram. Okay, so you should write here when final image is formed at image is formed at infinity. तो ये आपको डायग्राम बनाना है. ये आपकी इमेज बन गई. A dash B dash. And this you should write always as E lens, and this you should write as always O lens. ये पैरेलल लाइट रेस आपको बतानी है. This distance is FO and this distance is FE. So it is clear here that length of tube is FO plus FE. डायग्राम देखो. और मैग्नीफाइंग पावर साइन
का मीनिंग यही है कि इन्वर्टेड इमेज, बाकी कुछ नहीं. आप एम इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं, एफ ओ अपॉन. So you can use. So please draw this diagram. So this is the most important. We have got the two instruments, two application of lenses. One is astronomical telescope, another one is a compound microscope. और हमेशा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं. So draw this and tell me. Light rays are coming from infinity. That is why these light rays are considered. These light rays are considered parallel. And we know that when parallel light ray passes through a convex lens, that image is formed at focus. Image is formed at focus. This first image A dash B dash work as an object for E lens, and E lens forms the image of A dash B dash at infinity. और ये देखिए, ये जो आपको लाइट रेस दिख रही है, ये एक मिनट सॉरी, ये जो आपको लाइट रेस दिख रही है, you just observe them that they are parallel. And parallel light rays हमेशा कहाँ मिलती हैं? They always meet at infinity. And this is called normal adjustment. Normal adjustment. Normal adjustment तभी होता है जब इमेज कहाँ बनती है? When final image is formed at focus. And you can get all these diagrams in your NCERT as well as in any refresher. All the refresher have this diagram. You need to understand the diagram. जब आप diagram बना लें तो आप मेरे को बता दें. So FO plus FE. So length of tube will be FO plus FE and magnifying power FO upon FE. Practice करनी पड़ेगी diagrams की, because out of 5 marks, 2 marks are allotted for diagram. So you need to practice very seriously. Okay, आपने draw कर लिया.
हमेशा एंगल के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, अल्फा और बीटा। So revise both the diagram. In next class, we are going to cover the simple microscope and compound microscope, and resolving power also, resolving power of optical instruments. Okay, so always remember that this is a case of normal adjustment. So I have it drawn. Okay, तो अब देखिए, तो ये तो बातें आपने समझ ली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। अब आपको मालूम है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एफ ओ अपॉन एफ ई, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, फॉर लार्ज, समझिए आप इसको, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ शुड बी लार्ज, समझ में आ रहा होगा, एंड एफ ई शुड बी स्मॉल। इसलिए मैं कहता हूं कि एफ ओ माइनस एफ ई भी लार्ज होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम, जैसे मान लीजिए एफ ओ है 100 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज 5 सेंटीमीटर। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ऐसा क्वेश्चन आया, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइंड मैग्नीफाइंग पावर and length. So magnifying power is FO upon FE, 100 divided by 5, 20, and length of tube will be FO plus FE. So length of tube हो जाएगी 100 plus 5, so that will be 105 centimeter. This is a very simple way of doing it. आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो ऐसे ये क्लियर होता है। अब एक देखिए, आपको छोटा सा, हैव यू नोटेड डाउन? Okay, so I'm moving to the next slide. एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FO is 100 centimeter, FA is 5 centimeter. If final image is formed at least distance
of distinct vision. Find मैग्नीफाइंग पावर, सेकंड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। वी नो दैट FO is 100, FE is 5 and D is 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर होगा FO into 1 by D plus 1 by FE। 100 1 by 25, जरा ध्यान दीजिएगा, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आएगा प्लस 20, सो इट विल बी 24। लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। तो FO 100, 25 into 5 upon 25 plus 5, 100 plus 25 into 5 by 30। तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 100 plus 25 by 6, 100 plus 25 by 6। तो अब आप 25 by 6 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे दिस इज द आंसर एंड दिस आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। So this is the way of solving the question. Questions numericals are very simple over here. Importantly, आपको practice करना है रे diagram. Use your pencil and scale. Practice twice, thrice, 3 times, 4 times. Diagram carries the good marks, 2 to 3 marks. तो इस क्लास को मैं यही एंड कर रहा हूँ। Stay fit, take care. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। और ऐसे भी आंसर 25 by 6 को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, टेक केयर।